आजादी की खुशी दिल में समाई है, तिरंगा लहराकर देश की शान बढ़ाई है। वीरों ने खून से लिखी इसकी कहानी है, स्वतंत्रता की मिसालें हम सबको याद दिलाई है। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Namaskar and a warm welcome to all our viewers joining us from around the globe. I am Samiksha Sawant. And alongside I am Kshitij Bhasme. We are absolutely thrilled to be your host for the 4th edition of much anticipated virtual extravaganza, Antogatva 4.0, Wisdom at its Best, by YCCE Media. Antogatva has already completed 3 magnificent editions, and today we are commencing on the journey of the 4th edition, promising to be bigger, better and more inspiring than ever before. Antogatva is not just an event, it's a celebration of unity in diversity, a tribute to the tapestry of culture that makes up our vibrant world. It's an honor to have you all with us as we come together virtually to share our love for art, culture and spirit of togetherness. The most awaited thing amongst everyone, results of all the mini events conducted under the banner of Antogatva 4.0 will also be announced during the event, so stay tuned. Let the virtual curtain rise, show begin and the celebration of Independence Day commence. Welcome to Antogatva 4.0. What could be a better beginning for this auspicious event than indulging in the pride of our nation? Chandrayaan 3 is a tribute to the tireless efforts of our scientists, engineers to ensure that India's flag continues to fly high. Here, Taranj, the Astronomy Club of YCC, presents a short video journey on Chandrayaan 3. Join us as we celebrate our advancements in space exploration. Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चंद्रयान 3 चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है। अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त ही वो दिन होगा जब मौजूदा के साथ Chandrayaan mission. Chandrayaan for 312 days, India's polar satellite launched 400 people. Do you know, India's journey to the moon began with Chandrayaan 1, the country's first lunar mission. It launched on October 22, 2008. Following its success, Chandrayaan 2 was planned. However, despite the meticulous planning, Chandrayaan 2 faced an unexpected setback during its landing attempt. After the Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 missions, ISRO launched the next lunar adventure on 14th July 2023 at 2:35 p.m. IST from SDSC Sriharikota. The spacecraft consists of a lander Vikram, a rover Pragyan and a propulsion module. The lander and rover are expected to land near the lunar South Pole region on 23rd August 2023. The two modules of the 3900 kilogram spacecraft, namely the propulsion module and the lander, encompass a diverse array of payloads aimed at studying the lunar surface's atmosphere, mineralogy, and moonquake activities. At an orbital distance of approximately 100 kilometers around the moon, the lander will disengage from the propulsion module. Chandrayaan 3 was launched by India's most capable rocket, LVM-3. The lander, carrying a rover with it, will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. The lander will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of immense interest as it contains many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Its 4 lander payloads will aim to perform radio anatomy of moon-bound hypersensitive ionosphere and atmosphere,
the Chandra Surface Thermophysical Experiment, the ILSA and LRA experiments. Rover payloads contains laser-included breakdown spectroscope and alpha particle X-ray spectrometer. The propulsion module payload will include the spectropolarimetry of habitable planet Earth for discovery of habitable exoplanets. These payloads include studying lunar quakes, thermal properties of the lunar surface, changes in plasma near the surface, and accurately measuring the distance between the Earth and the Moon. The Chandrayaan-3 mission will carry a suite of 7 advanced scientific instruments to analyze the lunar soil and study the Moon's environment. These instruments will help scientists gather valuable data about the surface, subsurface, and the presence of water ice, which could be crucial for future human missions. ISRO said that it would attempt soft landing of the lander on the lunar South Pole on August 23rd. Upon landing, the rover would be deployed on the lunar surface. It will operate for 1 lunar day, which is approximately 14 Earth days. Later, the rover will send the data and commands to the Chandrayaan using radio signals. The received information by the Chandrayaan will then be relayed back to the Earth. A successful landing would make India the 4th country, only after the US, the former Soviet Union, and China to achieve this feat. On today's event of Independence Day, as the Indian flag flutters on the moon's uncharted territory, we witness not just a technological triumph, but the embodiment of human curiosity and the pursuit of the unknown. India's Chandrayaan-3 mission is a testament to the nation's unwavering dedication to exploration and discovery. Thank you and Jai Hind. What an enlightening video it was. Moving on to our first speaker, imagine a healer who uses compassion as a remedy within the world of wellness. Like an artist, he creates a complete picture of well-being that includes physical health, mental balance, and spiritual connection. He is not just a doctor who treats symptoms, he is a caring guide who addresses the very core of who we are. We are delighted to introduce you to a doctor who understands holistic health, whose ideas will help you navigate a path of fulfilling life. Get ready to join us with a journey towards a better health and happiness with the amazing Dr. Anup Marar. Good morning, dear youngsters. Happy Independence Day. I am Dr. Anup Marar, and today I take this opportunity to render some 10 pointers which should be useful in your daily life. Number 1. In the face of increasing pressures and stress, do prioritize your mental well-being. Seek help wherever needed. Manage stress, practice self-care, and develop some coping mechanism to maintain balance in your life. Second, in the age of social media and digital connectivity, it is important to be aware of the online risk. Be cautious of what you share, fact-check information, and engage in respectful and meaningful conversation with anybody. Third, surround yourself with positive and supportive friends and mentors who inspire and motivate you. Establish meaningful connections with them. This will not only encourage your personal growth, but also provide you support during your challenging times. Fourth, start early in understanding about personal finances. Learn about budgeting, saving, and investing and managing debts. Fifth, celebrate and respect differences in race, ethnicity, gender, religion, sexual orientation. Strive for an inclusive mindset. Sixth, in a rapidly changing job market, never stop learning, acquire new skills, stay up to date with industry trends, and adapt to emerging technologies. 7. Adopt sustainable practices in your daily life, such as recycling, conservation. Try to reduce your ecological footprints. 8. With the increasing demands of work and personal life, it is important to prioritize your time for rest, recreation, and relaxation. 9. Recognize social injustice and actively stand against any kind of discrimination, bullying, inequality, and biases if you see in and around you. 10th, cultivate a strong work ethic, perseverance,
and ability to bounce back from failures and setbacks. Please do understand that 1% of your negative thought can spoil the 99% of positive energy which you have in you. Hope these 10 pointers help you. God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Your insightful speech added depth and knowledge to our event. The stage will now belong to Mr. Amar Dongre, an esteemed alumnus of YCCE, who will mesmerize us with the skilled mouth organ performance. His music will echo the sentiments of unity and freedom.
Thank you, sir. It was really a wonderful performance. Moving to our next speaker, imagine having a guide who helps us figure out who we are and become better. They are like a designer for our inner thoughts. They help us feel mentally good and pave the way for our dreams to become true. We are here to introduce someone who knows a lot about how our minds function. They have advice about emotions, balance, and learning. Get ready to learn from the amazing Bhavishka Sugandh for an enlightening experience. Happy Independence Day to everyone. I feel very grateful that I got this opportunity to speak in front of this auspicious August gathering. Today, I'm going to emphasize a very important virtue of human life, that is patience. In future, no matter which career you will choose or which occupation you will opt for, each and every occupation and career is going to have certain demands for dedication, a lot of demand for precision, and a lot of demand for innovation as well. Hence, patience is going to act as a guiding light to fulfill all these demands. Patience is that important key ingredient that helps a person to achieve all his goals of his life. And with goals, I do not mean only career goals, but we have goals for our hobbies, we have goals for our personal relationships, we have goals for different pathways of a life that will lead us to personal growth. So patience is that important factor that is going to help you to understand, comprehend, and achieve all these goals. Whenever you encounter a new situation, you appraise that situation, you assess that situation. If you are patient enough, you are not going to appraise that particular situation as a threatening situation. In fact, you will take that situation either positive or either as a challenge. If a person is patient, the person is going to be able to understand the situation from different perspectives and come up with critical ideas regarding solution to a new problem. When a person is patient, the person does not take rejections and failures as something that is going to make him backward in his life. Recently, in one of my sessions of personality development, a client asked that after so many rejections and failures, how can I be patient? How does patience play an important role in every situation? I told him that just imagine a hypothetical situation. There is one shop and a lot of people are demanding a lot of things from that shop. What the shopkeeper did is he gave token to each and every person who was demanding certain things from that shop. You have also got a token and your token number is 20. What will you do? He said, obviously I will wait till 19 tokens are over. So I told him, similarly in life also we have to wait for the correct time to come. If others are getting certain things, it doesn't mean that it's a failure for you, it's a rejection for you. It's just that you have not got your token on that particular number. Your number is different from another person. And therefore, you have to be patient enough so that your token number will come and you will get the things which are required by you. The important thing behind this situation is that you have to keep your token with you and be in that queue consistently. That is what this patience is. Now a question arises in our mind that how a person can be consistently patient. The answer is gratitude. Gratitude is that art that makes a person recognize and appreciate the resources that the person is having. The person becomes aware that whatever things the person is having is already the things which he needs or she needs to fulfill all the demands of the life.
and even if you're not going to have those things, you will get it on correct time. So gratitude not only increases your frustration tolerance level, but also subsides all the negative emotions like stress, depression, anxiety and aggression as well. If you are grateful, automatically your patience level will increase, because you know that you have all the things which are going to be useful to achieve the goals of the life, and you will not feel frustrated. So therefore, gratitude and patience both go hand in hand. Being grateful does not mean that you don't need to strive hard or do not need to learn new skills. Of course, you need to learn new skills. But first of all, you need to appreciate what you already have in your life. That is what gratitude is. When you understand that already I have certain things in my life and only different things has to be added, you will not feel worthless. You will not feel incapable, and therefore you will be feeling motivated and you will be starting working for your goals in a much better manner, with more optimistic point of view, with more optimistic mindset. In the end, I just want to say that वो दे तो शुक्र कर, ना दे तो सब्र कर. Thank you so much, and once again, Happy Independence Day to everyone. Thank you, ma'am. Your words resonated deeply with our audience, leaving a lasting impact. Prepare to be captivated as Natran, the drama club of YCC, collaborates with YCCE Media to present a thought-provoking drama. This joint efforts is sure to leave us with a profound appreciation for our heritage and journey towards independence. सर बस यार, ड्यूटी खत्म, लगा कैरम। आज नहीं हारने वाला मैं। और आज अगर हार गए ना तो पहाड़ से मिठाई मंगवानी पड़ेगी। ठीक है। चल बता, काली की सफेद। हम इस बार सफेद लेंगे भाईजान। ठीक है। अरे आप देखो भाईजान। ओ यस, आपसे ना हो पाएगा भाईजान। अभी हम लेंगे रानी। रानी तो बस हमारे पास है। Need more, India needs more and more such money. हमारे धोनी ने फिर छक्का मारा। पिछली मैच में जब अफरीदी ने सेंचुरी मारी थी तब हम रोए थे क्या? पिछली बार वर्ल्ड कप नहीं था बेटा। ओफो, तुम लोग फिर शुरू हो गए। गेम है, गेम की तरह खेलो। सर चिट्ठी आई है सर। अरे किसकी आई है? किसकी आई है? अरे सर, ये तो आपकी चिट्ठी है। अच्छा, मेरी चिट्ठी है? बड़े दिनों बाद घर से कोई पार्सल आया है यार। किसकी चिट्ठी है भाई? अरे माँ की चिट्ठी आई है यार। बुरा ना मानो तो हमें भी पढ़ के सुनाएंगे। लिखती है, मेरे प्यारे लड्डू। लड्डू लड्डू माँ भी ना। लड्डू हमारे बारे में कुछ लिखा है कि नहीं भाईजान? पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए लड्डू भेजे हैं, अकेले मत खाना, उनको भी देना। बस यार, आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। तुम लड्डू खाओ ना। हाँ हाँ।
संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ये लड्डू खा। लड्डू? तुझे क्या लगा सब लड्डू खत्म हो गए? तूने खाया लड्डू? वजह से लेकिन अभी उधर से गोली नहीं चली। मगर मैं कहता हूँ फायर करो। सर नहीं। सर मत जाओ सर। सर नहीं। सर नहीं। सर वो आपको मार देगा। अगर तुम शहीद हुए तो तुम्हारे लड्डू की बहुत याद आएगी। बहुत निभा ली दोस्ती, अब फर्ज निभाने का वक्त है। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। तो यही है वो जगह जहाँ मेरा बेटा शहीद हुआ। फरीदा, हमारी सरहद यहीं तक है, आप आगे नहीं जा सकती। बेटा, माँ के लिए कोई सरहद नहीं होती, जैसे धरती के लिए कोई देश नहीं होता। आओ बहन। नहीं मैडम। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर ऐसे नहीं। अभिषेक चाहता था कि उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ उसके सबसे अच्छे दोस्त को मिले। हमारे बच्चों की ये दोस्ती इन सरहदों से परे है और ये वाकई काबिल तारीफ है। वसीम का भी यही वादा था। ऊपर नीला आसमान है, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले है और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंतर है नामों में? हम क्यों बटे हैं मुल्कों को, चाहे जय देश कहे या जय जगत। जय जगत, जय जगत, जय जगत। Think about someone who keeps us safe in the world of cybersecurity, where digital battles happen quietly. Here is a guardian of knowledge in this complicated world. He understands how software works, finds weaknesses, and makes sure our online world is protected. Today, we are lucky to introduce someone who is really good at keeping our digital lives safe. Get ready to learn from an expert in this field. Let us introduce you to the amazing cybersecurity expert, Mr. Sunil Sadashiv. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. On this anniversary of our independence, let us hold our hands together and salute all those heroes who bravely fought to give a generation full of freedom. I feel proud
as I am fortunate to be born in an independent India. Today, we are all living in an internet world, as we call it as cyberspace. So on this day of independence, the concern I wish to share with you all is: are we really safe and secure in this cyberspace? Being a person from IT and cybersecurity, I'm very sorry to say my answer is a big no. I always say mobile is the most important person in our life. I'll just tell an example. If tomorrow I wish to go to my bank to withdraw the money, without a mobile, it is not possible actually. As we all know, to get a money from the ATM, you need an OTP. So without a mobile, it is not possible actually. And the second thing is, if at all tomorrow, if somebody takes my mobile and go to bank, he will get my money. So in short, the owner of the mobile is the owner of the money. So nowadays, the figure and facts, they say the cyber frauds are getting more every day, and people are having a very fear of living in the cyberspace. So to reduce the number of crimes, we should, as a society, we should all come together as a group. Then we have to prevent the crimes actually. So for that, I need to appeal certain group of society to be involved and play their role actually. So I'll tell one by one. First is RBI. RBI, we call as a parent bank of all the subordinate banks. The RBI should make, considering the frauds happening these days, the RBI should make sure to bring security measures time to time and convey to their subordinate banks, and make sure that the subordinate bank should follow all these rules regularly actually. So that is the role of RBI. Second, the banks. I should say the subordinate banks. The banks plays a very important role, especially as far as the financial frauds are concerned. The first thing is, whenever a person going to bank to open an account, then they should make sure that the person who is coming for opening account, from them, that the documents which they are taking should be verified. So second part is bank, the subordinate bank, I should say. As far as bank is concerned, considering the frauds happening these days, there are so many fake accounts where the fraudster used to take the money actually. So to prevent that, what bank should do is, whenever a person come to open an account with them, they should make sure to verify all the documents which he is submitting, whether it is Aadhaar ID, whether it is a photo ID, etc., etc. And also the physical address of the person should be verified actually. This is not happening at times. This make the criminals more scope of getting an account actually. So one. Second, the banks, especially the major banks, they keep on bringing so many measures for preventing the cyber frauds. But unfortunately, these measures are not reachable to the common public. For example, if I say AEPS, that is Aadhaar Enabled Payment System, during my training session, I used to ask many of them, I should say that 90% of the public doesn't know what is AEPS. It's one of the good measures to prevent the cyber fraud. And second is virtual cards. There are virtual cards available to prevent card frauds. But unfortunately, the common persons, especially the the rural and semi-urban areas, that doesn't know actually. So banks should make measures to take these new techniques and security measures to the common person. That's not happening unfortunately right now actually. Then the third is police. Police play a vital role considering the crimes actually. And now the biggest issue is, during my sessions, whenever I used to ask, many of us doesn't know what is the number to report a cyber crime. Where is the place to report actually? So unfortunately, Maharashtra is one state where all the districts is having a cyber cell, exclusive cyber cell. But where is it? How to go there? What are the formalities? People doesn't know actually. So to get rid of this, what I wish is that every police station should have a cyber cell, so that the person who can go to the nearest police station and file his complaint.
So that will be a great help for the common man actually. And the fourth is the network operator actually. Network operator means like we are taking SIMs from many operators, maybe BSNL, maybe Airtel, maybe etc. So the message for them is whenever a person comes to procure a SIM card, they should make sure that the document which is submitting is to be verified very promptly, and also the physical address of the person. Whatever address proof he is giving, he has to go there and physically verify, because the considering the frauds happening these days, we found that people give fake addresses, fake photo IDs, and procure the SIM actually. Okay, then next is the schools. I proudly say like that being a Keralite, I submit a proposal to the government of Kerala to include the cyber security syllabus to the school, which ultimately got approved. So Kerala will be the first state who will be having a cyber security syllabus in their school curriculum. So like that, every schools in our country should make sure that the syllabus, the IT syllabus should have a topic called cyber security, so that the children itself, they themselves, grow in such a world that they will be aware of the cyber part actually. Then the online platforms, like I should say the social media or email or online purchasing portals. What they should do is, see, they should take minimum things from us, because nowadays we give all permission to them whenever we install an app. They should take a minimum permission. For example, if I'm playing a game, they should take only the consent part of the games. I'll make it more clear. There's a car game. The game is playing in a car, actually riding a car. But that game themselves, they take the permission of camera. Technically, camera is not necessary for them. Like that, many apps are taking unwanted permission that they should not be. So limited permission. And second message for them is they should share minimum information to the third parties, because they're taking for the agreement from us, saying that the data which they are taking is they will be handing out to the third parties. Of course, that is their business, this thing, but that should be minimized. I think that government should take care of that. That they should give minimum thing to the public. I mean the third parties. And the eighth is the media. Media again play a vital role, because whenever a fraud happened to a celebrity or a this thing, they cover that news actually. But when it happens to a common man, irrespective of the crimes, both are same, but still they report that only. And it should not be happen. The media should report all type of, technical frauds. I am not saying each and every fraud they should report, but the category of the fraud they should report, and also they should give one kind of what precautionary measures they should take. I used to get a lot of articles in Nagpur making the cyber literacy for the public. So like that, I strongly suggest that the newspaper should be having an exclusive column for cyber part actually, like health column, like economic, like that. They should have a separate column for even cyber also. Then the last and the foremost, individual. As an individual, one should be a cyber literate. Otherwise, if you are carrying a mobile, then there should be a cyber literacy. And as we know nowadays, without a mobile, we won't be able to survive, because to take a vaccine also, we need a mobile. So without a mobile, it is not possible. So since the mobile is mandatory for one's life, then he must be a cyber literate. That's all I wish to say all. And I wish you all a very safe journey, and have a very Independence Day again. Thank you. Thank you, sir. Your speech illuminated our event. Thank you for sharing your expertise. Let's not forget about you, our cherished audience. Your presence and engagement make this event come alive. Throughout the event, feel free to share your thoughts, reflections, and even wave a virtual hello in the comment section. Our next performer, Tanmay Pandav, a final year student from Mechanical Branch and devoted member of Kalaspash, the art club of YCC. He will be sharing his live artistry. Get ready to witness his creativity unfold on the virtual canvas. ठीक है क्या?
That's great, Tanmay. It was really jaw-dropping art. Ladies and gentlemen, let's welcome our next speaker, Ms. Smita Mire, the founder of Save Speechless organization. With over a decades of experience, she is a leading figure in speechless creatures welfare. Her awards include Gram Jyot National Award 2014, Best Speaker Award by Nagpur University 2018, and the Seva Animal Welfare Award nomination 2019. Let's applaud her efforts in giving a voice to the voiceless. Happy Independence Day to all students and everyone. I'm Smita Mire. I'm a founder of Save Speechless organization. So इस इंडिपेंडेंस डे में सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें फ्रीडम मिले हुए इतने साल हो गए हैं और इतने सालों में सिर्फ हमने हर चीज़ में ग्रो किया है, बट कभी ये चीज़ देखिए कि इनको फ्रीडम आज तक नहीं मिला है। ये वो जिस सिचुएशन में थे ये उससे बुरी सिचुएशन में आज भी जाते जा रहे हैं। ये एक यूनिवर्स का रूल होता है कि हम अपने साथ साथ हर चीज़ को ग्रो करें। इतने साल हो गए हमें फ्रीडम मिले हुए, बट आज भी ये एनिमल्स उतने ही सफ़र कर रहे हैं जितने वो पहले करते थे, शायद उससे कहीं ज़्यादा। हाँ, बहुत सारी जगह पे लैब टेस्टिंग पे या एनिमल टेस्टिंग पे कहीं ना कहीं बैन हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल जो एकदम सोशल एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हो गया, काउज हो गई या कैट्स हो गया, इन पे आज भी हम लोग उतना ही टॉर्चर करते हैं। आज भी आप देखते हो रोज़ नई नई कोई ऐसी केसेस आती है जहाँ पर कोई वो डॉग्स के हाथ पैर तोड़ दे रहा है, कोई इन पपीज़ को उठा के हाईवे पे फेंक दे रहा है, उनको मार दे रहा है, मदर से अलग कर दे रहा है। तो हमारी सोच को भी आज़ादी मिलने की बहुत ज़रूरत है, हमारी सोच को भी फ्री करने की भी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ आज़ादी हमें इंसान से इंसान को देने की नहीं, इंसान से हर चीज़ को देने की ज़रूरत है, नेचर को देने की ज़रूरत है कि आप नेचर में भी कितनी चीज़ें हम लोग फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, झाड़ बहुत सारे झाड़ हम लोग तोड़ रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हम उनके अगेंस्ट कर रहे हैं। सोच को फ्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग शायद इस बार ऐसा कुछ कमिटमेंट या ऐसा कुछ प्रॉमिस हमने करना चाहिए इस इंडिपेंडेंस डे पे कि एनिमल्स के लिए थोड़ा सा अपना प्यार रखिए। स्पेशली डॉग्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक डॉग शेल्टर चलाती हूँ। यहाँ कितने तो ऐसे डॉग्स आते हैं जिनके हाथ पैर टूटे हुए रहते हैं, ह्यूमन टॉर्चर से बहुत सारे केसेस आते हैं, जिनके स्पाइन टूटा हुआ रहता है, कोई ज़बरदस्ती उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, कोई उनको ज़बरदस्ती मारता है, कोई उनके ऊपर एसिड फेंकता है, कोई छत से उनको फेंक देता है, कोई इन बच्चों को ले जाके कहीं जंगल में छोड़ आता है कि कोई दूसरे डॉग्स इन्हें खा ले या कोई अदर बड़ा कोई वाइल्ड एनिमल उनको खा ले। ऐसे तो हम लोग बिहेव करते। कितनी काउ स्लॉटरिंग में जाती है, इतने रूल्स है, इतने रेगुलेशंस है, इतने लॉज है, बट ये लॉज और रूल्स और ये सारी चीज़ें तभी चल पाएगी जब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ हम पे ज़बरदस्ती इन्फोर्स करने से वो चीज़ें नहीं होगी, हमें समझने की ज़रूरत है। एनिमल्स के लिए थोड़ा सा अपना कंपैशन रखिए, इनको आप सपोर्ट करेंगे, आप प्यार दोगे तो आपको रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। जहाँ पर आप नफरत दोगे तो आपको रिटर्न में नफरत ही मिलेगी। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि थोड़ा सा एनिमल्स के लिए भी सोचिए, डॉग्स के लिए सोचिए, और कहीं आपको कोई हेल्प लगे तो सेव स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके साथ रहेगा। A heartfelt thank you, ma'am, for the insightful speech. For a mesmerizing dance performance that embodies the patriotic spirit, we have Nritya Kala, the dance club of YCCE. Their graceful movements and vibrant choreography will tell a tale of patriotism and unity. देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, ए वतन वतन ए माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और
मंजिलों की चाहत है ये बुलंद हिंदुस्तान है, सरहदें भुलाना भी जानती है और बचाना भी। ये नौजवानों का देश है, तिरंगा लहराने भी जानता है और उसमें लिपटने भी। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा का माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा भर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। वतन मेरे वतन है, वतन मेरे दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। जो दिल से यार हमें ले पुकार तो चांद सार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले। अपनी मर्जी के हम खुदा, बाकी है जीत की आवाज़। यारों से अपना वास्ता, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। You have really embraced our site with your performance. Today, we are excited to introduce someone who is really careful about the news he shares and who makes sure that the right information is known. Let us introduce you to the person who is the State Bureau Chief of Hindustan Samachar News Agency, Mr. Manish Kulkarni. नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुलकर्णी, पेशे से पत्रकार, हिंदुस्तान समाचार मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी में बतौर ब्यूरो चीफ सेवारत हूँ। पिछले 6 वर्षों से हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के साथ हूँ, लेकिन पत्रकारिता में लगभग 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिछले वर्ष YCC में आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से भेंट करने का, संवाद प्रस्थापित करने का मौका मिला था। उसी स्नेहबंध को आगे बढ़ाते हुए इस बार क्षितिज जी ने आदेश दिया कि सर 15 अगस्त को लेकर के हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हम आपकी साझेदारी चाहते हैं। मैं नागपुर से बाहर था, तो उनके इच्छा को, उनकी सूचना को आदेश मानते हुए वीडियो के ज़रिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को नमस्कार।
और स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग स्वाधीनता दिवस समारोह मना रहे हैं। इस वर्ष हमारी आज़ादी को 76 वर्ष पूर्ण होकर के हम 77 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन बीते 75-76 वर्षों में इतना कुछ हो चुका है और आगे इतना कुछ होने वाला है। जैसे कि पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण करते हुए कहा था कि ये आज़ादी का अमृत काल है और इस अमृत काल के दायरे को वो 2047 तक लेके गए। यानी जब आज़ादी को हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ये आने वाले जो 25 साल है, लगभग 25 साल का जो समय है, इसमें हमको क्या कुछ करना है, देश को क्या कुछ करना है और उस करने की प्रक्रिया में हम लोगों का क्या योगदान रहेगा, इसको लेकर के चिंतन करने का और पक्का विचार करने का, प्लानिंग करने का समय आ गया है। हालांकि आ गया है, ऐसा समय आ गया है, ऐसा कहने से ज़्यादा मुझे ये ठीक लगता है कि समय आ चुका है। जैसे हम अपने जीवन में विद्यार्थी है आप लोग, तो आप अपनी स्टडी की जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, अगर किसी की शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है तो वो नौकरी है, बिजनेस है या फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर के जो प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश को लेकर के, हमारे समाज को लेकर के हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसमें हम अपने पेशे के साथ में हमारी जो अवस्था है, यदि हम विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कितने अच्छे हैं, हम यदि जिस किसी भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में रहते हुए हम हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसको लेकर के मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ आपके सामने। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो किन विकट परिस्थितियों से उस समय के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाया है, ये इतिहास में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आज भी अनुभव करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब 2020 में एक जनवरी फरवरी से लेकर के कोरोना हमारे देश में आने लगा, कोरोना फैलते फैलते ऐसा मुश्किल वक्त आ गया कि अप्रैल 2020 में पूरे देश में अचानक से लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। अगर वो नहीं करते तो लाखों की तादाद में लोगों की मौतें और ज़्यादा भयानक रूप से हो सकती थी। तो उस समय जो फेस मास्क होता है ना, वो केवल डॉक्टर लोग पहनते थे, फिल्मों में हम लोग देखते थे और उसकी कीमत थी कुछ 15 या 18 रुपये। बाद में वो ब्लैक होकर के 25 रुपये तक मिलने लगा था। लेकिन उस समय हमारे देश में फेस मास्क तक नहीं बनता था। इतने बड़े पैमाने पर फेस मास्क का प्रोडक्शन भी नहीं होता था। लेकिन हमारे देश की जनता ने अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, खास करके मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, इन लोगों ने इतनी जी तोड़ मेहनत की सरकार की सूचनाओं का तंतोतंत पालन करते हुए कि 2021 के आते आते हमने 2 वैक्सीन भी बना ली, कोरोना को भी मार भगाया, ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए, टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए, परमानेंट हॉस्पिटल्स में अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई। मुझे जागृति फिल्म का वो गाना अच्छे से याद है, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के। तो कश्ती निकाल करके हम कोरोना के तूफ़ान से सक्सेसफुली लेके आए। तो जिस तरह से हम लोग कोरोना से बाहर निजात पाकर आ चुके हैं, उसी तरह देश के सामने भी पिछले 76 वर्षों में इतनी अलग अलग समस्याएं थी। उन समस्याओं से भी हम सभी ने अपने अपने योगदानों से मार्ग निकाला है, आगे बढ़ाया है, प्रशस्त किया है। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा एजुकेशन एमलिब बीएमसी हुआ है। एमलिब जो है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होता है। तो शुरुआती दौर में मैं नागपुर स्थित बीसीए लाइब्रेरी में बतौर लाइब्रेरियन काम करता था। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, वहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। अभी फ़िलहाल उसका क्या स्वरूप है पता नहीं, लेकिन उस समय 2002 में मैं वहाँ लाइब्रेरियन हुआ करता था। तो वहाँ से मेरे करियर की मैंने शुरुआत की, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। तो मन कहीं और था, जो मुखर होकर के कुछ कहना चाहता था, लिखना चाहता था। तो मैंने जर्नलिज़म को अपना पेशा बनाया। मैं लाइब्रेरियन था, तब से ही मैं लिखना प्रारंभ कर दिया था। नागपुर से प्रकाशित होने वाले तरुण भारत अखबार से मेरे नियमित कॉलम्स जो है वो प्रकाशित होते थे।
तो लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी, तभी मन में क्लिक हुआ कि नहीं भाई, यही अपना मार्ग है, यही अपना पेशा है और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहली सेवा जो दी बतौर पत्रकार तरुण भारत में, लोगों की काफ़ी सराहना मिली, हौसला अफजाई हुई, जिसके कारण प्रेरणा मिली कि भाई नहीं, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और अपनी इच्छा भी, जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको आप तनख्वाह में, वेतन में नहीं तोल सकते। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसकी यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी थी। फिर वो यात्रा और आगे बढ़ी। उसके बाद मैं ईटीवी मराठी में ज्वाइन हुआ। उस समय ईटीवी इंफोटेनमेंट हुआ करता था, यानी 6-7 नेशनल आधे घंटे के बुलेटिन होते थे, 15-15 मिनट के आवरली बुलेटिन होते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 1-2.5-3 साल काम करने के बाद पुनः नागपुर में लौट आया, एक स्थानीय अखबार में था और वर्तमान में देश की सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान समाचार में मैं कार्यरत हूँ। हिंदुस्तान समाचार ये 12 भाषाओं में सेवा देती है। शायद ही आपको पता होगा, आकाशवाणी, प्रसार भारती और आकाशवाणी के अलग अलग जो रीजनल चैनल रेडियोज़ है ना, जैसे महाराष्ट्र में मराठी का है, बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती है, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज है। तो हिंदुस्तान समाचार उर्दू, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़ा, तेलुगु, ऐसी 12 भाषाओं में, मराठी, ऐसी 12 भाषाओं में सेवाएं देती है अपनी, और आकाशवाणी पर हमारी खबरें जाती है। तो पत्रकारिता का पेशा करते करते हम समाज की जो पॉजिटिव, नेगेटिव सारी अच्छी खबरें देने का प्रयास रहता है। अखबारों के ज़रिए भी आती है और आकाशवाणी के ज़रिए भी आती है। एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। हाल फिलहाल में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से हमारी फिल्मों में या समाज में पुलिस वालों की प्रतिमा और इमेज जो है वो कुछ अंश में निगेटिव हमारी नज़र में दिखाई देती है, ऐसा ही हाल पत्रकार और पत्रकारिता का भी है। लेकिन अगर हमारा मन साफ है, हमारा कर्म अच्छा है, तो इन सब निगेटिविटी को झटक करके हम अपनी बात पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। और जो रखने का आनंद मुझे अपने जीवन में समय समय पर प्राप्त हुआ है। मैं जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था तो मुझे महाराष्ट्र की 48 और गोवा की 2 ऐसी 50 लोकसभा सीटें कवर करने का मौका मिला था। तो उस समय का जो मेरा कोऑर्डिनेशन था और जो अलग अलग अनुभव आए थे, उस अनुभव की कसौटी पर हमारे राज्य को, हमारे देश के एक छोटे हिस्से को समझने का मौका मिला। उसके बाद अखबार में काम करते समय नागपुर विश्वविद्यालय का पेपर लीक मामला हो या फिर किसी गरीब किसान की ज़मीन हड़पने का प्रयास हो और उस किसान के लिए जो हमने खबरें चलाई थी और उन खबरों का नतीजा ये रहा था कि उनकी सालों पहले उनके पुरखों की हड़पी हुई ज़मीनें सरकार को वापस लौटानी पड़ी थी, तो इसका आनंद अलग होता है। हम लोग जीवन में जीवन जीते समय अक्सर ये विचार करते हैं कि इस देश ने, इस समाज ने हमको क्या दिया, लेकिन विचार ये करना चाहिए कि हमने अपनी ओर से हमारे समाज को, हमारे देश को क्या दिया। कई बार हमको अक्सर ऐसा लगता है कि हम अगर कुछ मुखर होकर के कहने जाएंगे या करने जाएंगे तो ये चारों तरफ इतना कोलाहल भरा माहौल है, तो हमारी बात कौन सुनेगा। आप जिस किसी भी पेशे में हो, अगर आपके कथन के पीछे चारित्र्य है, त्याग है, एक जज्बा है, ईमानदारी है, तो हर कोई सुनेगा मित्रों, हर कोई सुनेगा और बहुत गंभीरता से सुनेगा और उसके नतीजे भी सामने आएंगे। तो निराशा से भरे माहौल में मुझे भी कई बार ऐसा एक अंतर्मन में लगता था कि चारों तरफ से जो बातें होती है तो ये ठीक हो रही है ना, लेकिन कुछ एक मौके ऐसे आए जिसमें पॉजिटिव तरीके से मैं कुछ काम कर पाया, तो वो अपने आप को समझाने में कामयाब रहा कि नहीं, हम सही रास्ते पर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सही कर रहे हैं। हमारी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
भगवान रामचंद्र जी जब लंका को जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे तो उनके साथ में अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान जैसे बड़े बड़े महाकाय परम पराक्रमी लोग थे जिनकी ताकत का लोहा इतना है कि आज भी किस्से कहानियों में, धार्मिक ग्रंथों में हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी जो है वो कंकड़ पत्थर उठा करके पुलिया पे चल रही थी और अपने आप को बचाते हुए चल रही थी कि किसी वानर के, बंदर के पैर के नीचे ना हो। ये दृश्य भगवान राम बहुत दूर से और बहुत देर से निहार रहे थे। कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि उस गिलहरी की पीठ पर जो लकीरें होती है वो राम भगवान की उंगलियां हैं। भगवान ने उसे शाबाशी दी थी कि अच्छे काम के लिए तुम्हारा एक छोटा सा योगदान। वो बहुत बढ़िया एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कुदरत का या भगवान के माध्यम से हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि मराठी में भी उसको कहते हैं खारी का वाटा। गिलहरी को जो मराठी में ना खार कहते हैं। तो अच्छे काम में जो छोटा सा हिस्सा उठाता है ना उसको खारी का वाटा मराठी में कहते हैं। तो ऐसा हम अपने अपने पेशे में रह कर के, अपने इसमें रह कर के कर सकते हैं। ये एक बहुत आनंद देने वाली बात है कि हमारे देश में, समाज में जो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं उसमें हमारा भी भाई थोड़ा सा योगदान रहेगा, रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी पेशे में हो, हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, पुलिस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, सब इस देश को खड़ा करने का, इस देश के समाज के व्यक्ति को खड़ा करने में, उसके भलाई में अगर उसकी सामने कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी से उसको हल, समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो ये मौका सबको मिलता है। हिंदुस्तान समाचार के साथ में काम करते समय मुझे बहुत आनंद आया। एक ये अलग तरह का, अलग किस्म का जो है अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपने इलेक्ट्रॉनिक की पत्रकारिता सुनी होगी, आपने प्रिंट मीडिया यानी अखबारों की और रेडियो की भी पत्रकारिता देखी सुनी होगी कि लोग जो है मिल जाते हैं। तो ये एजेंसी की पत्रकारिता एक अलग चीज़ होती है। उसमें हमको मौका मिलता है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जैसे हम खबर बना करके भेजते हैं तो कई अखबार भी उसको प्रकाशित करते हैं। आप समाचार पत्र पढ़ते समय देखते होंगे मेन एडिशन पर खबर शुरू होती है, उसके पहले लिखा होता है एजेंसी। देश में अन्य कई एजेंसियां हैं, उसमें हिंदुस्तान समाचार सबसे पहली और पुरानी एजेंसी है, पूरी तरह जो भारतीय है और विश्व की एकमात्र एजेंसी है जो अलग अलग भाषाओं में आती है। 12 भाषाओं में हिंदुस्तान समाचार जो है सेवाएं देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, तो मैं हिंदी में और मराठी में करता हूँ, तो हिंदी की खबर जो है अन्य भाषाओं में सुगमता से अनुवादित होकर के चली जाती है और अलग अलग रेडियो चैनल्स में और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित होती है। तो देश में जो अच्छी सकारात्मक घटनाएं हो रही है वो अन्य लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को जनता और सरकार तक पहुंचाना एक सशक्त माध्यम है, जरिया है, जो अपने आप में आपको बल देता है और आनंद भी देता है। बल इस बात का देता है कि हम जो है बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और आनंद देता है जब उसका सकारात्मक नतीजा सामने आता है तो लगता है कि नहीं, हमारा जीवन भी कोई नीरस और निरर्थक नहीं है, हम बहुत अच्छा कर सके हैं, अच्छा कर पाए हैं। इसी तरह आप सभी लोग भी हैं अपने अपने अन्य अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं। आप सोचिए, आदमी के जीवन में परिवर्तन का एक पल काफ़ी होता है। आप सभी ने अपने स्कूली जीवन में इतिहास ज़रूर पढ़ा होगा और इतिहास में विदेशी वस्तुओं की जो होली होती है वो ज़रूर सुनी होगी। तो मुंबई में गांधी जी के आह्वान पर जो अंग्रेज़ों की लाई हुई वस्तुएं थी वो जलाने का क्रम चल रहा था। ऐसे में एक 16-17 साल का लड़का सामने आता है और विदेशी मालों का जो ट्रक जा रहा था उस ट्रक के सामने अपनी छाती को फैला करके खड़ा हो जाता है और उसी में वो शहीद हो जाता है। उस शहीद का नाम था बाबू गेनू।
17-18 साल का बाबू गेनू। आज बाबू गेनू इतिहास की पुस्तकों में है और उसके जरिए हम तक पहुंचा हुआ है। जो भी इतिहास पढ़ता है भारत की स्वाधीनता का, उन सभी को बाबू गेनू पता है। लेकिन जब तक वो ट्रक के सामने खड़ा नहीं रहा, उसके पहले का जीवन बाबू गेनू का कुछ था नहीं, और जिस वक्त ट्रक के सामने खड़ा रहा उसके बाद उसका जीवन बचा नहीं। वो ट्रक के सामने खड़े होने का फैसला और ट्रक के सामने ढेर होने का जो अंतर है, उस 15 मिनट का जीवन बाबू गेनू एक देश के लिए जिया और अमर हो गया। हमारे सामने बलिदान करने का कोई प्रसंग नहीं है, तो अगर कोई 15 मिनट के लिए इस देश के लिए ऐसे जी सकता है कि वो सदा सदा के लिए अमर हो जाए, तो हमारे सामने तो कई मौके हैं। आप अपने पेशे में रहते हुए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और इस देश को जाते समय कुछ देख कर जा सकते हैं। मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो एक बहुत अच्छी ऐड आती थी, उसमें उस समय की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की ऐड थी, वो आई बैंक हैदराबाद की। हाउ विल यू लिव कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर यू गॉन। तो उनका जवाब था आई विल डोनेट माई आइज़। तो जाते समय इस देश को, इस समाज को कुछ दे करके जाना और इस भारत माँ का बेटा बन करके जी करके जाना, ये हमारे हाथ में है। हमारा आने वाला कल आज से कुछ बेहतर होगा। इसी जज्बे के साथ आप सबको एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद। और स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन हमारे देश में हुआ और उसकी परिणति रही कि इस देश को आज़ादी मिली, उन सभी महानुभावों को सादर वंदन करते हुए और आप सबको अभिवादन करते हुए मैं अपने शब्द का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Your speech captivated our audience and left us with much to contemplate. The power of words takes the center stage as Emerge, the poetry club of YCCE, shares heartfelt patriotic poetry that will evoke a sense of pride and unity. कोई पूछे करके कौन है जो कौम हिंदुस्तान है, कहना कि सुनना ध्यान से ये हमारा मान है। हम है अशोक चक्र, हम राष्ट्र स्वाभिमान है, जो है तिरंगी नस्ल हम उस असल की संतान है। शत्रु की आंखें चीरते तीर का कमान है, हम ढाल है हर मित्र की, किसान है जवान है। हम पासबान इश्क है, हम एक धड़कती जान है, सिर्फ जान ही नहीं कि हम एक जानू का जहान है। हम वो ख्याल है कि जो हर नब्ज में आबाद है, हर एक रिश्ते से परे हम हिंदी की औलाद। हम संस्कृति का साज है, गूंजती आवाज है, हम राज है साहित्य का, हम शून्य का आगाज है। हम विश्वभूमि से उभरते सूर्य का स्वराज है, पृथ्वी हमारा तख्त और आकाश हमारा ताज है। हम धर्म जात भेद से आज़ाद थे, आज़ाद है, हर एक रिश्ते से परे हम हिंदी की औलाद। एक इनकलाबी शौक की खुशबू से महका बाग है, 22 सुरों के धागों से मिलकर बनाया राग है। माना के पीठ जख्म है सदियों के जुल्म से, मगर फिर भी हमारे सीनों में जलती वतन की आग है। पिघला नहीं सुलग के भी हम वो अजीम फौलाद है, हर एक रिश्ते से पर हम हिंद की औलाद है। संदेह क्यों ये आम है, हम बस बनाम एक है, हम वाद विवाद में भूल गए कि हम तमाम एक। ये वो ज़मीन है जहाँ पंडित इमाम एक है, मजहब अलग भले ही हो, प्राण और प्रणाम एक है। दो गिरों में फ़र्क है मौजूद अगर दिन रात का, तो हाँ हमें मंजूर है कि सुबह शाम एक है। हम एक नहीं तो कुछ नहीं, हम है तो हम निर्वाद है, हर एक रिश्ते से परे हम हिंद की औलाद है, हर एक रिश्ते से परे हम हिंद की औलाद। जय हिंद, जय भारत। 76वां यौम आज़ादी सबको मुबारक। Your poem really brought out patriotism in us. If we tell you about our next speaker, her accomplishments speaks volume, a recipient of the prestigious Padma Shri Award and recognized as the Week's Magazine Woman of the Year, her influence transcends boundaries. Her efforts have not only brought honor to her, but have ignited inspiration in people
all across the nation. Dr. Didi, as she is fondly known, is a name synonymous with the excellence and dedication. It is absolute privilege to have Dr. Kshama Mitre with us today. Hari Om, Namaste. Dr. U.P. Wage, Yashwant Rao College of Engineering's principal, Dr. Aniket Munshi, Dean and the students' activities in charge, as well as Mr. Shichi and Miss Unati, and the many distinguished guests today, as well as the faculty of the college and the students. I would like to thank you all to have invited me to this very special function of Antogatva, your annual function. It is always very refreshing to talk to young students, young minds, especially budding engineers who are going to come up with solutions to problems, not only solutions to problems, but also creative solutions. I'm very familiar with your inquisitiveness, your enthusiasm, your even your potential, as I am associated as an advisory member with the House Institute in College of Engineering, Pune, where I see young engineers like you brilliantly coming out in their innovations in the incubator lab of Bhau Institute. But today, however, since your function of Antagatva is on 15th August, I would like to base my talk more about on our Independence Day. Last year in 2022, on 15th August, the commencement of our Azadi Ka Amrit Mahotsav began, and this year, on this date, there is a culmination of its first year of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. And this year's title is Meri Mati, Mera Desh. And the tagline for it is Mati ko naman, Veero ko vandan. Now with this, we pay our tribute to the many soldiers, our heroes that laid out their lives for our country, and to those who are now protecting our borders. As well as this year, I'm sure in your places too, nameplates have been installed in the name of the heroes in various panchayats, like we've done it here in Himachal Pradesh. As well as this is the day that we all are going to take the Panch Pran pledge again. I'm in fact taking the pledge this time with a fistful of soil in our hands and a earthen diya. Now, how many of you remember the 5 pranas that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi spelled out last year? Do you remember it? It is now time to pledge for those 5 pranas. The first prana was to free our minds from the mental self-slavery that we are all living through the colonization period of the Middle East from the 11th, 12th century, then passed on to from the 17th century to the European invasion and colonization, ending with the British Raj 76 years ago. We, as Bharatiya, became independent in 1947, but our minds have not become independent. The minds are still clutched in those colonized, brainwashed minds, and many of us think it's very smart and successful to ape the West mindlessly. Not only this, some of our youth have alienated themselves with their own roots
and look at disdain at their own communities and societies. What is worse is some places they have gathered clout in the academic side, and they've been looking through the prism of the West and very much affecting and influencing our policies and laws, and marginalizing those who come with their indigenous thoughts. So it is time for us to free our minds from this kind of colonization. The second pran and the second pledge is about being proud of our heritage, being proud of our culture, our heritage, our traditions, our values. How many of us are aware of the many years of a glorious civilization? How many of us know the scientific contribution, the architectural contribution, the way of life, and the very ancient Vedas, the revelations of the rishis, and the very great values that we have inherited, as well as our rich history, including the strife and strains and struggles our ancestors went through to protect this land, and our Sanatan Dharma, that is all about universal being inclusive of everyone, not only human beings, but also all jivas, and be worshipful towards nature. So look around you, you will see the very rich heritage, the diverse culture of our country, vibrant and diverse with its traditions, deep values and knowledge. Now we come to the third pledge. The third pledge was prana, is about our duties towards our own nation, our country. In Bharat, we do not talk of rights as much as we emphasize on our duties, because once we perform our duties, rights come to us as an adhikar to perform those duties. And moreover, if we all sincerely perform our duties for everyone, then everyone's rights will be covered beautifully. So the second pledge is about our duties. So let us think, how can we contribute? Each one of us can contribute. Instead of thinking about what the nation can do for us, we should start asking, what can I do for the nation? Do you remember John F. Kennedy's very famous quote? Ask not what the country can do for you, but ask what you can do for the country. With this kind of thoughts, I would be dwelling into this duty phase a little later too. But just now I would like to talk and remind you that if we get into these three pledges, we will definitely be bringing about the fourth pledge, which is to bring about a developed country, a developed nation for us. And the fifth is about bringing solidarity in our country. Now, as all of us continue our journey in this Amrit Kal from our Independence Day last year to 2047, when India would have risen to its 100th year of independence, each one of us have a role to play. And many of you youngsters, young students, you will be at the peak of your career 24 years later. However, now, today too is the date when you can play your part in contributing to making our nation great. We, as Indians, have a youth population. In fact, more than 65% of our country is below 35 years of age, and 28.7% of all of you between the age of 15 and 29 years is that big chunk of our country. So all of us
the youth in our country are sitting on a gold mine of you youth with energy, with idea, tech savvy, freshness, and many other enthusiastic, energetic views that you have. A refreshed mind can look at many things in a very beautiful way, which you all will have the possibility to do so. And your way of not accepting the status quo. So there's much you could all contribute. All of you studying in this college are very, very privileged. And I would definitely want you to do very well in your study, excel in them, in fact. But nevertheless, just do not limit yourself to the academic walls alone. This is a time as youngsters you can become change makers. Be the change you want to see. And there are so many things and opportunities for you to see around and make a choice where you would like to contribute. It can be anything. It can be music, it can be sports, it can be helping the aged, it can be helping some youth to study, or making the group of young men to learn from you, or it could be addressing certain evils like the alcohol abuse, drug abuse, so much prevalent amongst youth. You can think of jati discrimination, gender discrimination. Oh, there's so many things. Pick anything that you find interesting, address it, and start doing something about it. Just don't sit and watch around and see whether others are doing. You do it. When you start becoming a change maker, you will see how much change it brings to you yourself. You will change as a person. You will become so much more open-minded, become much more confident, much more creative in your attitude towards things. You will be catalyst. A change maker is always a catalyst and a connector, an influencer, a social entrepreneur with a lot of network of your own. You know, you heard of net worth. Your net worth would increase many folds just because you go out and do things yourself. Your ability to face challenges will increase many times. Therefore, such change makers are usually the ones who are not job seekers, they are actually job providers. So think big, think for Bharat, become the trendsetter, make a new path, the change maker, the change person that you make our country very, very successful, with samagra vikas happening, sashakt country with samriddhi. So I'm looking forward to you youth contributing to the country's growth. May you be inspired with the blessings of your teachers and your parents. And I would like to thank Antogatva to have given me the opportunity to talk to all of you. And as I end my talk, I work in a beautiful place in Himachal Pradesh where we are serving 6 states in the country in rural development. All of you are invited to this place in Dhamshala at the foothills of the Himalayas. You can come as volunteers, you can come as visitors or interns, or even take a fellowship in the various aspects of our holistic rural development. And thank you all. Hari Om, Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence. Our last speaker. Imagine having someone who keeps things in order and makes sure things are fair in our society. He's like a guardian who protects the rules and makes us feel safe. With a specialization in cybercrime, he has emerged as a key figure in safeguard the digital landscape and upholding the principles of justice and security in the modern age. Today, we are proud to introduce someone who serves
and is really committed to keeping us safe and treating everyone fairly. Get ready to meet an accomplished law enforcement professional who serves as an assistant police inspector has made him a great example of justice. Sir API Amol Dod. गुड मॉर्निंग यूथ। मेरा नाम असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल डॉन। मैं साइबर पुलिस स्टेशन में था पहले, अभी मैं अजनी पुलिस स्टेशन में नागपुर सिटी में कार्यरत हूँ। जो ये इवेंट होने जा रहा है अंतोगत्व 2023 जो YCCE मीडिया द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो काफ़ी सराहनीय ये इवेंट है। और 15 अगस्त 2023 जो हम 77th इंडिपेंडेंस डे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस उपलक्ष्य पे YCCE द्वारा इस तरह से जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यूथ के लिए मुझे कहा गया कि कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, तो डेफिनेटली एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मुझे यूथ के लिए दो मैसेज में यहाँ पे देना चाहूँगा। जो फर्स्ट मैसेज रहेगा वो रिलेटेड विद द साइबर क्राइम से रहेगा, और सेकंड रहेगा थोड़ा पर्सनैलिटी के बारे में कि हम IQ से ज़्यादा हमारे इमोशनल क्वेश्चन को किस तरह से इम्पोर्टेंस दें। तो साइबर रिलेटेड मैं इसलिए यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि यूथ जो है आजकल मोबाइल्स सारे घर में आ गए, सारे यूथ के हाथ में मोबाइल आए हुए, और मोबाइल के बगैर रहना बोले तो एक तरह से मुश्किल हो रहा है, ऐसा यूथ को लगता है। हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट अर्जेंट है तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन टाइम जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो टाइम यूथ उसमें स्पेंड ज़्यादा कर रहा है, अननेसेसरी टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसकी वजह ये है कि सारे यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कितना नहीं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते समय हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए ये नहीं पता है। और 4 साल से मैं साइबर पुलिस स्टेशन में था, तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये यहाँ पे मैं मतलब शेयर करना चाहूँगा कि यूथ जो भी है सोशल मीडिया जब इस्तेमाल करता है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहे, व्हाट्सएप रहे, इंस्टाग्राम रहे, फेसबुक रहे, या हमारा जीमेल आईडी पे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, या यूट्यूब है, जो भी सोशल मीडिया है उसकी 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट तो हमें कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो प्राइवेट मोड पे हमें करना है, पब्लिक मोड पे रखना नहीं है, प्राइवेट या पर्सनल मोड पे रखना है। सेकेंड चीज, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हमारे है वो सोशल मीडिया अकाउंट के 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हमारा काफी पर्सनल लाइफ वहाँ पे शेयर करते हैं, और वो सारा पर्सनल लाइफ जो फ्रॉडस्टर बोलिए या फिर जो भी आपके एनिमी है या फिर जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं वो मिसयूज कर सकते हैं वो डेटा। इसलिए मैं हमेशा यूथ को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। हमें तो इनफैक्ट हमने तो शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शेयर करते भी है तो एटलीस्ट हमारा सेटिंग ये 2 चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। और सेकंड है यूथ जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी मान लीजिए कि अगर शॉपिंग करना है या फिर अगर हमारी जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स की तरफ अट्रैक्शन के लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। और ऐसे समय में ये होता है कि जो फाइनेंशियल मतलब हमारा जो पैसा है वो पैसा अकाउंट से चला जाता है। तो मैं यहाँ पे यही एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि हमारा पैसा बैंक में अगर 100% सिक्योर्ड अगर यदि आपको लगता है रहना चाहिए, तो 4 चीज़ें बेसिकली आपने नहीं करना चाहिए। या फिर फर्स्ट चीज़ है OTP देना नहीं है, सेकेंड चीज़ है कोई भी लिंक को क्लिक करना नहीं है, थर्ड है कार्ड डिटेल्स हमें शेयर नहीं करना है, और फोर्थ है कि हमें अगला जो भी आप पैसे भेजते हो, जो भी अनजान इंसान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे भेजते हो, तो वो अकाउंट और IFSC कोड हमें वेरीफाइड करना चाहिए। यदि ये 4 चीजें आपने अगर केयरफुली करते हैं तो आपका पैसा जो है वो 100% सिक्योर रहेगा। और ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यूथ जो है हमारा काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी रहता है यूथ में। तो जो भी मेरा 23 इयर्स पुलिस डिपार्टमेंट का जो सर्विस है वो सर्विस को मैं देखते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यूथ ने हमारा IQ जो होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमारा इमोशनल क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इमोशनल क्वेश्चन
के तरफ, मतलब हमारे इमोशन को, यूथ को बैलेंस रखना आना चाहिए। अब इमोशन को बैलेंस रखना मतलब ये, यदि वो इमोशन को बैलेंस रखेगा तो वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है वो बखूबी निभाएगा। सेकेंड, हर यूथ के अंदर अपना एक अच्छा क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी को हमें शो करना है और हमारे जो वीक पॉइंट्स है उसको हमें ओवरकम करना है। और यूथ को मैं ये भी सजेशन दूंगा कि आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, कोई भी इमोशन रहे। अगर आप ज्यादा एक्साइटेड भी है तो एक्साइटेड भी मत ज्यादा पिक लेवल पे जाइए, या फिर गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा भी मत ज्यादा लेवल पे जाइए, क्योंकि इसको बैलेंस रखना जरूरी है। गुस्सा आना अच्छी बात है, लेकिन एक पैमाने से ज्यादा यदि गुस्सा आप करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलते हैं। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है और कम्युनिकेशन स्किल है वो हमें डेवलप कराना चाहिए। हमारा वेलबींग अच्छा होना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहना चाहिए। प्रॉब्लम जो भी है हमारी लाइफ में आते हैं उसको सॉर्ट आउट करने का जो सॉल्यूशन जो है वो हमें ढूंढना है, और उसलिए रिलेशनशिप अगर आप अच्छे रखते हो तो रिलेशनशिप की वजह से आपके प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और मुझे नेक्स्ट हमेशा लगता है कि इम्पैथेटिकल, यूथ ने हमेशा इम्पैथेटिकल होना चाहिए, मतलब पुट अवर सेल्फ इन अदर शूज। यदि आप सामने जो भी आपके पास हेल्प के लिए, हेल्प मांगने के लिए आता है, तो आपने ये सोचना चाहिए कि यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता था। और लास्ट जो है वो हमारा सर्विस है। आप यूथ जो भी वर्क करते हो वो नेशन के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। तो यदि ये 10 जो मैं यहाँ पे बताया आपको, जो स्किल है, ये स्किल यदि आप डेवलप कराते हो तो मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो काफी उनका जो लाइफ का फ्रेमवर्क है, वो लाइफ और उनकी जो टारगेट है, ड्रीम्स है, वो अचीव करने में उनको हेल्प होगा। तो थैंक यू वेरी मच YCC मीडिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किए और ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दिया उसके लिए मैं थैंक यू। और एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Your speech was a highlight of our event, enlightening us all with your knowledge and perspective. So, here we disclose the results of Antogatva 4.0 mini events. मैं भी क्रांतिकारी, a fancy dress competition, and Avahan, a letter to the Prime Minister. मैं किटूर रानी चन्नम्मा, वो स्त्री जो अपने देश के लिए प्राण देने से भी नहीं डरी। जब मेरे देश पर अंधकार छाया था तब मैं ही थी वो पहली स्त्री जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए। बचपन से ही मैं अपने युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। शादी के बाद किटूर राज्य में जब मैंने अपने पुत्र को खोया तब ब्रिटिशर्स ने हमारे किटूर राज्य पर अपना अधिकार जमाने का सोचा। क्या हुआ अगर हमारे पास उत्तराधिकारी नहीं था? हमारे पास हमारा जुनून था, हमारा देश प्रेम था। इस रानी चन्नम्मा ने ठान लिया, चाहे प्राण चले जाए पर स्वतंत्रता कभी नहीं। तब हम सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स पे हमला करने का ठाना और उनकी बहुत बड़ी टोली को मार गिराया। और जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली, उन्होंने छल कपट का रास्ता अपनाया। हमारे महल में घुसकर सारे तोपों में से गन पाउडर निकालकर उसमें कीचड़ भर दिया और मुझे 5 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया। उन्हीं 5 सालों में मैं अपनी मातृभूमि को प्यारी हो गई। पर मुझे गर्व है कि इस देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए मर्दों के साथ मैंने भी हाथ बढ़ाया। इसमें सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का भी उतना ही योगदान है। क्या हुआ अगर आज मैं जिंदा नहीं हूँ? आज भी अगर कोई मेरे राज्य पर आंख उठाकर देखेगा ना, तो उसकी आंखें नोचने की ताकत रखती हूँ मैं। मेरा देश प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ। जय भारत। Hello everyone, I am Dr. Uday Wage, Principal, Yashwantrao Chauhan College of Engineering, Nagpur, an empowered autonomous institution. On the eve of 77th Independence Day, I wish all of you Happy Independence Day. Dear students, let me congratulate you on the event of 77th Independence Day. Hey, hi. This is Dr. Aniket Munshi, Dean of Student Activities YCCE. अंतोगत्वा सीजन 4, अंतोगत्वा 2023 में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 3 सीजन में, पिछले 3 साल में आप सभी ने अंतोगत्वा को जो रिस्पांस दिया है, जो सपोर्ट किया है,
उसके लिए आप सभी का मन से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मीडिया क्लब ऑफ YCC जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, जिसका ये 6वां साल स्टार्ट हो चुका है, मीडिया क्लब का ये एक बहुत ही स्तुत्य उपक्रम है जिसमें जो स्पीकर्स अब तक इन्वॉल्व हुए, जो अब होने वाले हैं और जो आगे भी होते रहेंगे, उन सबका भी मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Hello, myself Professor Rajin Kedlawatkar, in charge Media Club and Literature Club YCC. First of all, I congratulate all the members and students associated with this club who organize Antogatva event. This is consecutive 4th year to organize the event. At the end, I say very happy Independence Day to all of you. Thank you very much. Hi, I am Dr. Shaini Suresh, the psychological counselor. Congratulations to the whole Antogatva team for putting in their best efforts to make this whole program a success. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to introduce to you the 4th edition of Antogatva. And at the same time, I'm very happy to say that the Media Club of YCC have completed 5 years. All the students who have worked and toiled hard for this Antogatva and Media Club, I wish them best of luck. Happy Independence Day. Let's carry the essence of this event with us and continue spreading love, understanding, and acceptance. Until we meet again in the 5th edition of Antogatva, keep the flame of unity burning bright. Thank you for being a part of this incredible journey. Stay connected, stay inspired.